शिवार्षभानवि देवी दयितायो कृपावधये कृष्णा संबंध विज्ञान दैने प्रभवे नमः। माधुर्यजल प्रेमाढ्यो शिरपानुगो भक्तिदान गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे शिरपानुगो विरुद्ध अपसिद्धान्तो धान्तो हारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भार संबोधे पदम्बुजयते नमः। नमः भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय शिरपानुगवरायते वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षणकारणतयोषायी गर्भोदशचपयविधीशायी शेषश्च जस्यांशकाला सनित्यानन्दकरं शरणं ममस्तु। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्र नमो नमस्ते। लादिनी स्वरूपाय श्री गौरांग श्रीदशते भक्त शक्ति स्वरूपाय गदाधर नमोस्तुते। महाविष्णुर्जगत्कर्ता मयोज सृज्य तदा तस्यावतारम् एवमद्वैताचार्यैश्वरः आद्वैतं हरिनाद्वैतं आचार्य भक्ति संसनान् भक्तावतारम् ईशनं तमद्वैताचार्य आश्रये। शिवास्पंडितं नौमि गौरांग प्रिय पार्षदम्
Yasya kripalavenapi Shri Gauranga Jayate Rati. Namaste tu halagramam Namaste musalaudho Namaste rebatikanto Namaste bhakta vatsalah Namaste bolinang shrestha Namaste dharanidharo Pralambare namaste tu Trahi mang Krishna purvaja. He Krishna karuna sindhu Deenabandhu jagatpate Gopesha gopika kanto Radha kanto namostute Tapta kanchana gaurangi Radhe vrindavanashari Vrishabhanusate devi Pranamami haripriya Vrindavai tulasi devvai Priyavaya keshavasya Vishnu bhakti pade devi Sattvatai namo namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Raise your hand, chant Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. বাঙালি সব হিন্দি বোঝেন? বাঙালিরা কে কে শুধুমাত্র হিন্দি বোঝেন হাত তুলুন। বাঙালি আছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ শোনো, today is preparation day. Adhivas. Adhivas means preparation. What preparation? I already explained about it today morning. Preparation to cleanse the dirt of our heart. Cleanse. What dirt we have in our heart. Material appreciation, recognition, name, fame, distinction, all the desire is like a dart of our heart. How much does this type of dart stuck in our heart, that much we are away from Supreme Lord. How much we are away from Supreme Lord, that much we are feeling suffering. We are suffering here. How much we are away from Lord, that much we are in the trap of Maya. Trap of illusionary energy, Maya. Maya means Miyate anaya iti Maya. Whatever not true, but we are thinking it is true. We are also doing accordingly, believing accordingly. Then it is called Maya. Like we are thinking that this material world, material body, all are eternal. It is illusion. Body is like me. It is illusion. No.
Body like a container. So, Vaishnava practice is teaching us to become soul consciousness, not body consciousness. Soul consciousness, soul. Soul, what is soul? Soul is tiny existence of Supreme Lord. Tiny existence. In that context, we can say we are all tiny part of Lord, cell of Lord. Therefore, we should think about it. Today, while you are observing the Vyasa Puja Adhivas, Vyasa Puja Adhivas, preparation for Vyasa Puja, cleanse the dirt of our mind, cleanse the dirt of our heart, dirt of our consciousness, and make everything ready to accept Lord and His pure devotees in our heart. Why? Because we can get Lord Krishna's mercy through the pure devotee. We are not able to get it directly. Why? Because it is very difficult. Because we have lots of anartha, unwanted mundane desire, lots. Whenever we have anartha, it is impossible to get mercy from Lord directly. But Lord eagerly Lord has eagerness to bestow His mercy to all of us. Therefore, Lord sent as a devotee. I can give an example. Dhruva Maharaj, now, do you know that Dhruva Maharaj? Dhruva Maharaj, in mind, he fixed that I want to meet with Padma Palas Lochan Hari. Means, I want to meet Lord Hari who has eyes like a lotus petal. I want to meet with Lord. Mother Suniti, Suniti, perfect principle. Mother Suniti told by her son, Mother, where can I find Lord Hari? Where can I do sadhana for Lord Hari? Mother naturally explained it is better to do sadhana practice in forest, jungle. Then Dhruva Maharaj decided to go over there. He's a prince. Prince, king, they have mode of passion. Rajagun. So decided to leave the house, go to jungle, but doorkeeper stopped. God stopped Dhruva Maharaj. And they said, okay, I have to ask Uttanapad. Uttanapad actually Dhruva Maharaj's father. What is so soft? Father of Dhruva Maharaj, Uttanapad. As soon as God explained that your son wanted to go out for sadhana in jungle. Uttanapad passed his remarks that please tell Dhruva not to go there. I know what reason is it. Because Dhruva went to meet with his father
in the Suruchi's palace, stepmother's palace. At that time, Suruchi means whatever he feels tasty, he will eat. That's the matter. He never feel any kind of rules and regulation. Whatever he like, he want to follow. He want to say, she want to say. So she say, hey, Dhruva. Dhruva saw, when he saw that his brother Uttam is son of Suruchi, Dhruva is son of Suniti. Uttam is sitting on the lap of his father Uttanpad. That time, Dhruva has desired to sit, natural, it is natural. The Dhruva has desired to sit on the lap of his father. So what happened? That time Dhruva told my mother, stepmother Suruchi, that if you really want to sit on the lap of your father, then you have to pray to Padma Palasulochan Hari, Lord Hari. Leave your body and come to my womb. Then you are eligible to sit on your father's laps. So therefore, Uttanpad just tell to the guard, please tell Dhruva, I like to give him 20 villages. Dhruva Maharaj said, thinking, I am not starting my sadhana yet. Now 20 villages appear. Then he said, listen, I have to go. Then again God says, wait, let me ask your father. So, that time Father Uttanpad proposed him, tell Dhruva, don't go any places. I will give him half of my kingdom. Still Dhruva decided to go. Why? All those material stuff is not allowing us to get an eternal bliss. Rather, they make us feel eternally distressful. All devotees are distressful. Why? It is nature of the material world. But when he go there, Dhruva, now he left home. Went to forest. Determination, strong determination. He want to meet with Padma Palasulochan Hari, Lord Hari. But Anartha was there. He wants to get father's lap, means Singhasan. Anartha is there. So therefore Lord not coming, not able to come. So what time, at that time what Lord did? Lord just sent his pure devotee Narada Muni. Narada Muni as soon as gave him initiation, he practiced, then immediately Lord appeared. Therefore I am telling you, we may do so many things in the name of spiritual practice, but if we are not keeping connection, keeping connection with pure devotee of Lord, it is very difficult for us to be delivered from this miserable mundane world. So what happened? Narada Muni gave initiation.
and immediately Lord appeared. Lord Mercy come down through Narad Muni. Therefore we can see there is a code. Guru Krishna Ruphan Sastera Pramane Guru Rupe Krishna Kripa Karen Bhakta Gane Guru Rupe Krishna Kripa Karen Bhakta Gane. This line most important. The Krishna bestowing his mercy to all his devotees. The devotees who have, all we have unwanted mundane desire, anartha. Whenever we are anartha, we are not be eligible to get Krishna's direct mercy. Go through via where we go via, that is called Guru. Diksha Guru, Shiksha Guru. Most important part, to accept Guru. Most important part, accept Guru, then get Krishna's mercy. But it is also difficult, how can we recognize a Guru? We are not able to recognize. Our vision is not that much strong enough to recognize who is pure devotee, who is qualified to be Guru. So, Narottam Das Thakur explain us. Krishna Kripa Guru Mele, Guru Kripa Krishna Mele. By the grace of Krishna, we can reach Guru. By the grace of Guru, we can reach our ultimate final destination of spiritual practice. Connected. Our eyes spoil to see all the atmosphere, surrounding atmosphere, always hankering, always pulling us down, dragging us down for material enjoyment. Therefore, we should try our best way to find out the way to be delivered from the miserable condition. In order to be delivered from the miserable condition, we need to be connected with bona fide spiritual teacher. Bona fide spiritual teacher. We have to think about it. So Guru, Guru like this. Guru is non-different. Guru Krishna Ruphan Shastre Pramane Guru Rupe Krishna Kripa Karen Bhaktavane. The Krishna is bestowing his mercy through Guru to us. So हमारा गुरुदेव का वैश्य पूजा में पूजा का आज अधिवास है। अधिवास का मतलब क्या है? अधिवास का मतलब है कि ये प्रिपरेशन, प्रस्तुत करना, सब कुछ तैयार करना। क्या तैयार करना होगा? दिल तो गंदा पड़ा, दिल को साफ सुथरा करके तैयार करना पड़ेगा। दिल को साफ सुथरा करने के लिए है क्या? दिल को साफ सुथरा करने के लिए हमारे पास है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र
ये आया तो गोलोक से आया। गोलोक का प्रेम धोन आज कृपा करके महामंत्र रूप ले करके हम लोगों को पास आया। लक्ष्य क्या है? सबको उद्धार कराने का लक्ष्य है। कैसे कृपा मिलेगा? कृपा का मतलब क्या? कुछ करो उसके बाद मिलेगा। घर में बैठ बैठ के कुछ कृपा नहीं मिलता। पैसा तुम्हारा हाँ भाग में है, लेकिन नहीं हो रहा। क्यों? दृष्टांत तो दे रहा। तो काम करो तब तो का पैसा मिलेगा ना। का काम आसमान से, हमारा पैसा आसमान से फेंकवा देगा। ऐसा भगवान नहीं करते। जो कुछ करो भगवान का चरण पे दिल लगा के करो, हो जाएगा काम। चरण भगवान का चरण पे दिल लगा के हरि नाम करो। और हरि नाम करते करते दिल साफसुदा हो जाएगा। दिल साफसुदा हो गया तो तुम्हारा मौका मिल गया। भगवान को निमंत्रण देने के लिए मौका मिल गया। और भगवान हमारा हाथ से पका हुआ खाना जब मिलेंगे, हाँ, भगवान एक बार ले लिया तो कृपा हो गया हमारा। हाँ, लेना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन लेगा। उम्मीद रखना पड़ेगा। तो जो भी हो, भगवान हम सबको उद्धार करने के लिए नाम रूप लेकर के आया। और नाम पूरा ताकत लगा दिया नाम पे। पूरा ताकत, आधा ताकत नहीं, पूरा ताकत लगा दिया होली नेम पे। कई लोग नाम करते करते पुकारने लगे, भगवान का कृपा के लिए पुकारने लगे, तो भगवान आंखों दे देगा। कोई सच्चा है, कोई झूठा है। ये लोग सच्चा कि झूठा पता तब चलेगा भगवान का कृपा जब मिलेगा। तो हमारा आँखों में दृष्टि, हमारा आँखों में, दिल में सब कुछ महसूस करवा देगा, महसूस करवा देगा। ये प्रणव ठीक है कि नहीं? जुगमाया ठीक है कि नहीं? सब कुछ करवा देगा। परमेश्वरी ठीक है कि नहीं? करवा देगा। आंखों में देखो ना, बागेश्वर बाबा क्या करते? बागेश्वर बाबा, तुम गया तो तुमको सब लिख देगा, सिद्धि है कर देगा ना क्या। तो जो भी हो, तो इस प्रकार गुरुकरण करने का तरीका ऐसा है। पहले तो भगवान का नाम लेकर के भगवान को पुकारो, भगवान आंखों दे देगा, भगवान गुरु को भिजवा देगा, हमारे पास गुरु को भिजवा देगा। हम सब कहाँ पे जन्म लिया? मैं जन्म लिया तो एक गांव में। कैसे हमारा गुरुजी का बांग्लादेश का, अभी तो बांग्लादेश हो गया, पहले तो बांग्लादेश नहीं थे। बांग्लादेश होगा जशोर जिला, गंगानंदपुर डिस्ट्रिक्ट, गंगानंदपुर गांव गंगानंद गांव। वहीं पे कैसे संबंध हुआ पता करना चाहिए। भगवान
हम सबको भिजवा दिया। कोई स्वभाव नहीं दिया। सबब दिया भगवान के, सबब दिया, कुछ सबब दिया। भगवान स्वभाव नहीं देता, मनुष्य शरीर को स्वभाव नहीं देता। तो दो चीज देता, एक अच्छा वाला बुद्धि, मैंने सबसे बड़ा बुद्धि, और स्वतंत्रता दिया। तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करोगे तो तुम गड्ढा में पड़ जाओगे, और सुपयोग करोगे तो भगवान के पास चले जाओगे। तो भगवान बोला तो उनका कृपा लेने के लिए उनका भक्तों का सहारा लेना चाहिए। भक्तों का सहारा नहीं होने से कभी दिन हो नहीं सकता। इस प्रकार एक दृष्टांत तो हम खड़ा किया। दृष्टांत ही है कि ये ध्रुव महाराज, ध्रुव नाम सुना था, ध्रुव का नाम। तो ध्रुव महाराज जब हिंदी भाषा है कि नहीं, हम কি বলবো, বাংলা বলবো না হিন্দি বলবো? আমরা হিন্দি বলছি কেন, বাঙালি তো বাঙালি না, বাঙালি সব বাংলা নাকি? হ্যাঁ, হ্যাঁ হিন্দি বোঝো তো? বলুন কে বাংলা বোঝে না, বাংলা বোঝে হিন্দি বোঝে না, হাত তুলুন তো। বাংলা শুধুমাত্র বাংলা বোঝে, হিন্দি বোঝে না, হাত তুলুন। তাই আইসা না, তার মুশকিল। तो बंगला पता है तुम्हारा? तब कैसा? हम बोला बांग्ला समझता लेकिन हिंदी समझता नहीं। तो जानो ना, हाँ तो कोई गड़बड़ हो गया तो लैंग्वेज सब गैप हो गया ना। तो जब भी हो, अच्छा যেভাবে হোক আমাদের গুরুকরণ করতে গেলে আমাদের চোখে যে দৃষ্টি রয়েছে, তো দৃষ্টি দিয়ে আমরা কে ভালো কে খারাপ বুঝতে পারবো কি? প্রশ্ন আমার। এই লোকটা ভালো, ভালো পরমার্থের দিক থেকে অনেক ভালো, দেখি বোঝা যাবে? উত্তর দেয় না, এসেছে বাঙালিরা তো উত্তর দেয় না। হ্যাঁ, বোঝা যাবে না তো? তাহলে কি করতে হবে? গুরুকরণ করতে গেলে দেখে করব না ভগবানকে ডেকে করবো? কোনটা বলো, জোরে বলো না রে বাবা, ফেমার করছে দেখছো ভাই। হ্যাঁ, একদিনই বলছে খালি, আমার কথাটা বুঝতে পারছেন তো নাকি? তাও বলবে না হ্যাঁ ওকে নাকি বলবে, বলো হ্যাঁ বুঝতে পারছো কথাটা? আমাদের মনে করুন আমি খারাপ কি ভালো, বিষ্ণু মহারাজ খারাপ কি ভালো আমাদের বোঝবার ক্ষমতা আছে? সাধারণ লোকের ক্ষমতা আছে? তাহলে কে বুঝতে পারে? ভগবান, ভগবান আমাদের শক্তি দিয়ে দেয়। ভগবান কৃপা, ভগবানের কৃপাতে আমরা গুরু ভালো না খারাপ চিনতে পারবো। এটা কি বলছে? কৃষ্ণ কৃপায় গুরু মেলে, গুরু কৃপায় কৃষ্ণ মেলে। কৃষ্ণ কৃপা হোক, কৃপা কৃষ্ণ তো এই জগতে সকলকে উদ্ধার করানোর জন্য নাম রূপ নিয়ে এসছেন, এসছেন কি না? এখন নাম রূপ নিয়ে এসছেন, সেটা কি? হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র নাম। এই নাম গ্রহণ করলে কি হয়? হৃদয়টা পরিষ্কার হয়ে যায়, তখন হৃদয়েতে ভগবান এসে যায়। ভগবান আসলে তখন ভগবানই আমাদেরকে তার যথার্থ প্রতিনিধির কাছে নিয়ে যায়। ভগবানই আমাদেরকে তার যথার্থ প্রতিনিধির কাছে নিয়ে যায়, নিয়ে যায়। হ্যাঁ, সেই জন্য আমাদেরকে কী করতে হবে? ভগবানকে হৃদয় থেকে ডাকতে হবে। ভগবান যখন কৃপা পরবশ হয়ে
হ্যাঁ, আমাদেরকে তখন কোনো ভালো তা আমাদের জীবনের উপযুক্ত গুরুকে নিয়ে এসে দেয়। হ্যাঁ, সেটা বলছেন যে কৃষ্ণ কৃপায় গুরু মেলে, গুরু কৃপায় কৃষ্ণ মেলে, এইটা হচ্ছে আসল কথা। সে ধ্রুব মহারাজ একটা আসল উদাহরণ। ধ্রুব মহারাজ যখন জঙ্গলে চলে গেলেন, জঙ্গলে তপস্যা করার আগে যখন বাড়ি থেকে বেরোতে যাবেন, তখন ধ্রুব মহারাজ তার রাজপ্রাসাদের দারোয়ানরা তাকে আটকে দিল। উত্তানপাতের কাছে খবর চলে গেল, উত্তানপাত খবর পাঠালো, আমি কেন ধ্রুব চলে যাচ্ছে সেটা আমি জানি, তোকে বলো, আমি 20টা গ্রাম দিয়ে দিচ্ছি, তুমি আর দেও না বাড়ি থেকে। ধ্রুব ভাবলো যে আমার তো মানে কিছুই সাধনা করলাম না, 20টা গ্রাম পেয়ে যাচ্ছি, তাহলে সাধনা করলে কি পাবো? তো যাবার ধ্রুব মনে মনে বিচার নিল, যাবই যাব। তারপর বলছে অর্ধেকটা রাজ্য দিয়ে দিচ্ছি, হচ্ছে তারও দেখাল, চলে গেলেন। কিন্তু বিচারে ছিল কি, পিতার সিংহাসন নেব, রাজ্য চালাবো, এই বিচার নিয়েছিল। যখন ভগবান আসতে পারছে, অনর্থ আছে তো আসতে পারছে না, এই ভৌতিক জগতে, জড় জগতে আসে, জড় জগতে এসে থাকা খুবই মুশকিল আছে। এটা যন্ত্রণাগ্রস্ত, দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত নাকি? হ্যাঁ, দুঃখের লহরী। যাই হোক, আমার ইংরেজি বলতে হবে। হ্যাঁ, তো যাই হোক, যখন ভগবান ধ্রুবর সাধনার ডিটারমিনেশন মানে সাধনার যে চরম লক্ষ্য, তার যে প্রচেষ্টা দেখে ভগবান খুশি হয়ে তাকে দীক্ষা তাকে মানে কৃপা করতে চাইছেন, কিন্তু সে তার তো আশ্রয় নেই। তখন কাকে পাঠালেন? তখন পাঠালেন নারদ মুনিকে, পাঠালেন ধ্রুবর কাছে। নারদ মুনি নানা রকম পরীক্ষা করলেন, কিন্তু ধ্রুব একদম মানে চরমভাবে প্রতিজ্ঞা করে আছেন, আমি ভগবানকে দর্শন করবই করব, ভগবানকে আমি বলবো, আমি ভগবানের কাছে নালিশ করব, কি আমাকে এরম বললো কেন, সুরুচি বিমাতা সুরুচি বললো কেন আমাকে? যখন নারদ মুনি কৃপা করে দিলেন, ভগবান এসে গেলেন, ভগবান এসে হাজির হয়ে গেলেন। এটাই হচ্ছে আমাদের, হ্যাঁ, এটাই যথার্থ দৃষ্টান্ত যে ভক্তের কৃপা না হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ভগবানের কৃপা, ভগবত কৃপা, ভক্ত কৃপানুগামী, কৃপার অনুগামী। ভক্ত যাকে কৃপা করবেন, ভগবান তার কাছেই থাকবেন। ভক্ত কৃপানুগামী। তাই ভগবান আমাদের ভালো দৃষ্টান্ত, ধ্রুব মহারাজের ভালো দৃষ্টান্ত। যাই হোক, তো গুরু বৈষ্ণব क्या बोला हम, वॉट एवर आई से, गुरु एंड वैष्णव। हमारा पूर्व वॉट एवर आवर प्रीवियस टीचर एक्सप्लेन, दैट आई एम गोइंग टू से, गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण। तो वैष्णव, हाउ बिग हिज क्वालिफिकेशन, just wearing the neck bead, putting tilak, wearing dhoti and upper garment cloth is not the criteria to become bhakto. Actually, main criteria is Harinam. Harinam, main criteria to become a devotee, to become dear to Krishna, we need to get Harinam. কৃষ্ণ নাম হতে পাবে কৃষ্ণের চরণ, কৃষ্ণ নাম হতে পাবে কৃষ্ণের চরণ। তো গুরুর কথা তো চলে গেল, হোয়াটএভার, ল্যাঙ্গুয়েজ সুইচ হয়ে যাচ্ছে, ব্যাস ল্যাঙ্গুয়েজ সুইচ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ,
What language I spoke? Bangla. Anyway, sorry for that. So, how to reach Krishna's lotus feet? Through chanting Hare Krishna Mahamantra. Whoever chanting Hare Krishna Mahamantra, we consider them, they are Vaishnava. Our Vaishnava is very dear to Krishna. Very dear to Krishna, Vaishnava. How much dear to Krishna? Our Shastra explained. Guru, Vaishnava, Bhagavan, Tine Smarane Hai, Vigna Vinashan, Anase Hai Nijo, Vanchita Puran. Guru, Vaishnava, Bhagavan. Three you have to remember. Chain wise. I only like my spiritual master. Rest, useless. That is offensive. Very offensive. Do you believe that offensive? Look, I can give an example. First example I am giving from the Srimad Bhagavatam. One text. What text? What text? Lord says to Uddhava. Lord explained to Uddhava. What he explained? No tatha me priyatama atma janina. He Uddhav, Atmajani Brahma, means myself, my mind, my self-manifestation mode of passion form. Brahma is mode of passion form, Rajagun form, Rajagun incarnation of Lord. So what happened? So Brahma, Atmajani, Swayambhu, self-manifested form, although he is my mode of passion, incarnation, but he is not that much dear, how much dear you are. Brahma is not that much dear, how much dear, Uddhava, how much dear you are. Not Shankara. Sankara means Shiva. Sankara Shiva. She says that although Sankara is mode of darkness incarnation of me, Krishna says, he is not that much dear. Hey Uddhav, how much you are my dear. Then, Shana Shankarshana, my manifestation form, Shankarshan, Balaram, Anantashesh, you may say it is Balaram, right? How he can be Krishna? Krishna's expansion, all we are, all over, where is life, there is Krishna is there. The mode of darkness, the mode of goodness, Shankarshan, they are not that much dear, how much dear you are. Then what is that? No see. Lakshmi Devi is not that much dear, how much dear are. No, Ivat Masabhamam. Means
Even my soul is not that much dear. How much dear you are. So Vaishnava's quality, Vaishnava how much dear to Krishna, that is clear. Brahma, Vishnu, Maheshwar, everybody there. Or our Guru is there. Our Guru is there. So to whom we pay obeisance first? Brahma, Vishnu, Maheshwar, three are there, side by side. My spiritual master also there. What is our duty to pay obeisance first? Huh? Huh? Guru ऐसा को लगा ना. Guru means Guru Tattva. Anyway. Yeah, good. Because Vaishnava Krishna Priyo Kahe Bhagavate. All the Vaishnava they are that much dear. Krishna himself explained to Uddhava. Shankara, Brahma, Maheshwara. They are not that much dear. How much one devotee, pure Krishna's devotee, dear to Krishna. This is one proof. Lord always favorable for Vaishnavas. Lord always favorable for Vaishnava. Do you believe or not? Drishtanto. Give me example. Bolo. একটা দৃষ্টান্ত দাও, একটা উদাহরণ দাও। Okay, so Nityananda, give me an example. Lord always favorable for Vaishnavas. Vaishnav Krishna Priyo Kahe Bhagavate. Vaishnava is very dear to Krishna. That is Bhagavad says. Do you have any example? I'm not able to say. Ambarish Maharaj, But tell me this. Hey, my শুনতে পাচ্ছেন ফ্যান অফ করে দাও এত ফ্যান খালি ঘুম পেয়ে যাচ্ছে আমার nice cool atmosphere I feel sleepy actually when Sukdev Goswami giving Harikatha hey fan off করে দাও না এদের অফ করে দাও দুধের শব্দ আছে অফ করে দাও হয় নাকি তাই So Ambarish Maharaj, what is the history of Ambarish Maharaj? Please let me know. Hey, mic down. Observing Ekadasi Vrat, and it was just about time for breakfast. He just received the visit of Durvasa Rishi as a guest.
At that moment, Durvasa Rishi first went to the river to take a bath, but was exact time. He had just a few seconds to break fast. And the sages gave him, advised him to break fast only with a drop of water. And so he would observe accordingly his guest, attending his guest, and wouldn't break the fast before feeding the guest. He did so. After taking a drop of water, How? Drop of water? a drop of water, yes. Charanamrit. Charanamrit. With holy grass, durba, drip into the charanamrit and then put it on your tongue, on his tongue. One drop. Not only his from his this actually it is decided by present scholarly Brahmin. They say you can do so, then you can have breakfast. Huh? No. So after that, Durvasa Rishi, through his mystic powers, he noticed that Barish Maharaj had broken the fast, Ekadasi fast, and got very mad with him, telling that it wasn't the right way to receive guests. At that moment, he took a pinch of his dreadlock and manifested a demon to kill Barish Maharaj. Huh? The demon that Kritta. Krita demon. And in that moment, the Lord sent his chakra to protect Barish Maharaj and kill the demon. When the chakra killed the demon, the chakra started also to go after Durvasa Rishi. Durvasa Rishi went to many places to protect himself. He went to Lord Shiva, I can't remember this one. To who he went for protection? Vishnu. Vishnu, straight. He went to Vishnu to First went to Brahma, then Shiva, then he went to. Actually, well, I don't know what to do. Not to stop the Sudarshan Chakra. It is not my territory. Brahma, Vishnu, Brahma, Shiva, everybody says like that. Then he's going to Vishnu. Then Lord Vishnu said that himself couldn't stop chakra because chakra was protecting his devotee. The devotee was more Aham important. bhakta paradhina. Bhagavan says, this is not my chakra anymore, this is chakra from our devotee. Ambarish. Now what happened? And then Lord Vishnu instructed Durvasa Rishi to ask for forgiveness for Barish Maharaj. That was the only way to stop the chakra. So this did Durvasa Rishi. He went to Barish Maharaj. But what Durvasa Rishi thought about that? When Supreme Lord says, Lord Vishnu says, Aham bhakta paradhina, I am actually depending on my devotees. This is my chakra from now, not from me. Now from this Ambarish. Then what Durvasa Rishi thought about that time? I am a sannyasi. Or his householder. How can I go and beg pardon of sannyasi? What Lord says, look, when my Sudarshan Chakra, when you create from your jetlock, Kritta demon Kritta, and order her to kill Ambarish, what Ambarish does? He's standing with folded palm, full of tears, thinking that in my palace,
oh Lord, in my palace, one Vaishnava, not happy, angry, please give me punishment. I supposed to get punished. Then what happened? My Sudarshan Chakra goes and cut Kirta's body, and then Sudarshan Chakra come to you. But you are not believing. Ambarish never step back. When you create this Kritta demon, Ambarish never step back. But my Sudarshan Chakra goes and cut his body. But you, when Sudarshan Chakra come to you, what you did? All over the world you are moving to protect your life, but you are not surrendered to me that much. How much Ambarish is surrendered? Who is surrendered to us? How much we surrender, that much we have Vaishnava quality, that much we become dear to Krishna. Am I clear? Hey, Vaishnava Krishna Barbara Buddhavan dao. तुम तो इमा तो बोल रहे हो बोल रहा अम्बरीश तुम क्या बोल रहे बोलो पांडव बोलो इंग्लिश बोलो हिंदी बोलो ना हिंदी बोलो हरे कृष्णा और हिंदी बोलो तुम भगवान हमेशा भक्त का रक्षा करता है। इस कथा का उदाहरण के लिए पहला नित्यानंद प्रभु अम्बरीश महाराज जी का कथा सुनाया। अभी दूसरे उदाहरण के लिए मैंने बताया था पांडवों का बारे में। देखने जाए तो पांडवों का कुछ भी नहीं था, सेना भी बहुत कम था, लेकिन हमेशा कुंती देवी ऐसा ही प्रार्थना करते थे कि हमारा संसार में हमेशा दुख भरा रहे, ताकि भगवान को हम लोग हमेशा याद रखें और भगवान जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ हमेशा आनंद रहता है। इस प्रकार से पांडवों का वनवास जीवन, युद्ध का समय, बड़ा बड़ा सेनाओं का साथ युद्ध करते हुए कभी उन लोगों का हार नहीं हुआ। भगवान प्रतिज्ञा किया था मैं कभी भी अस्त्र नहीं उठाऊंगा कुरुक्षेत्र का युद्ध में, लेकिन अपना भक्त को उद्धार करने के लिए जब अपना भक्त का विपद देखा, स्वयं भगवान अपना प्रतिज्ञा को तोड़कर अस्त्र उठाने में वो स्वयं मजबूर हो गया। तो इस प्रकार से श्रील गुरु महाराज जी ने जो विषय को अभी चर्चा कर रहे थे, भगवान हमेशा भक्त को अनुकूल में ही रहता है और इस दृढ़ विश्वास का साथ कोई भक्त भजन करे, भगवान उनका भी हमेशा साथ रहेंगे, साथ देंगे। ऐसा ही बात इंग्लिश हाँ Pandava, Maharaj is telling that Pandava was very dear to Krishna. Is it true or not? Pandava is dear to Krishna. It is true or not? Do you believe it or not? Parameshwari. Believe. You believe. Bhagavan love Pandava, and Bhagavan love is devotee's quality, devotional quality. Bhagavan love dharma. Dharma is religiosity. Religiosity in this current age, Kali Yuga, is devotion. So Pandava always observed religiosity, dharma. Therefore, Lord was in their favor. Similarly, Vaishnava also in favor of dharma.
If there any Vaishnava, they are always favor of dharma. Do you believe or not? Do you believe it? কেউ কোনো উত্তর দিচ্ছে না। Yoga. Do you believe? Huh? Vaishnava, they are practicing dharma, real dharma's principle. What is the dharma in this current age Kali Yuga? My question, Krishnamai. You understand or not? Vaishnava, I already explained. Vaishnava practicing dharma. What is dharma of this current age? Current age means Kali Yuga. What is dharma? Huh? Nam Sankirtan. কলিকালে ধর্ম হয় নাম সংকীর্তন এতৎ অর্থে অবতীর্ণ শিশচীনন্দন। So Kali Yuga when appear, then Parikshit Maharaj, Pandava's last generation, Parikshit Maharaj kept Kali alive. Kali, you know Kali? Kali Maharaj, Parikshit Maharaj, Kali alive. Why? Why Parikshit Maharaj lets Kali alive? Kali Yuga. Kali means hypocrisy. This is good or bad? Hypocrisy, good or bad? Bad. So why Parikshit Maharaj kept Kali alive? Very bad. Why Parikshit Maharaj kept Kali alive? This is my question for you. Jodi Bhagavan, Kali Maharaj, যদি দেখে কলি মহারাজকে পরাস্ত করার জন্য সমস্ত প্রকার শক্তি পরীক্ষিত মহারাজ ছিল, কিন্তু কলিকে বাঁচিয়ে রাখলেন কেন এই যুগে পরীক্ষিত মহারাজ? একজন করে বলো। ও তো আমার কলে কি হবে? ওটা তো ঠিক আছে, ওটা ভালো উত্তর হলো না। বলো শ্লোক বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ কি বলছো বুঝতে কি? এবার তুমি বলো ইংলিশে। ওটা তো ঠিক আছে, কিন্তু পরীক্ষিত মহারাজ সম্বন্ধে কি? কলি মহারাজ পরীক্ষিত মহারাজ পরস্পর হয়ে দেখা যাচ্ছে, ফেস টু ফেস। পরীক্ষিত হ্যাঁ কি কোনটা কি? উত্তরটা সরাসরি একদম। We have to, our answers to be direct, connected with the incident. Incident is when Parikshit Maharaj saw Kali Maharaj hitting with its feet to a cow, and with a whip he is beating to an ox. Huh? এটাই হচ্ছে ভালো কথা। কলি মানে মহামুনি বেদব্যাস explain Maharaj Parikshit Maharaj honey bees
honeybees. Why honeybees? Flower and honey. Is it possible for you to get honey from the flower? Only honeybee can collect the honey. Parikshit Maharaj knew that although Koli have lots of problems, but Koli have one benefit. What benefit? Nanudashti Koling Samrat Saranga Eva Saravuk. Saranga Eva Saravuk means honeybees. So Parikshit Maharaj saw, let Kali alive, and let Kali Yuga's people can be benefited through chanting, be delivered. What is the actual benefit? Next line, that's the most important line. Kusalanyasi siddhanti netorani kitani yat. Kusalanyasi siddhanti means any decision we are taking, what is auspicious decision, auspicious for us, for people, we took the decision but are not able to perform it, but still we can get full benefit. But netorani kritani jat. But in sinful activity, when you perform it, then we can get reaction. Am I clear? Bolo Bangla, Hindi to bolo taka. Short artho karo. Nanudashti Koling Samrat Saranga Eva Saravuk Kusalanna Siddhanti netorani kritani jat. Hare Krishna. तो अर्थ हो ना कली शब्द अर्थ कलह आधार कली से समस्या में भरा हुआ है। इसीलिए परीक्षित महाराज कली महाराज जी को मारने के लिए तैयार हो गया। तब कली महाराज जी परीक्षित महाराज जी को कहने लगे, आप तो हमको मरने जा रहे हो, हमारा भी एक अच्छा गुण है। परीक्षित महाराज सोचने पर गया, इसका भी और अच्छा गुण है। क्या अच्छा गुण है जो सत्युग में, त्रेतायुग में, द्वापर में आसानी से नहीं मिला, बहुत तपस्या करने का बाद मिला। अगर कलयुग आए आसानी से भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का रूप में प्रकट होकर जगत जीव का तारक ब्रह्म यानी उद्धारक महामंत्र का रूप में कार्य करें। तो परीक्षित महाराज जी गुरु महाराज ने जो श्लोक बनाए, किसी भी धर्म सिद्धांत को लेने में परीक्षित महाराज जी जैसे राजा बहुत विचक्षण, वो इतना विचक्षण है क्योंकि उसका कभी भी गलती नहीं हो सकता है। इसलिए बोला कली को छोड़ दो। कली तो ज़्यादा जगह नहीं, मतलब 5 जगह है, 5 जगह को छोड़कर बाकी सब सतयुग से भी बड़ा है कलयुग। अगर कोई गुरु पाद पद्म का अनुगत्य तो स्वीकार करते हुए हरिनाम करे, इससे अच्छा समय यार कभी भी नहीं। हम बोला नहीं, असली चीज़ है परीक्षित महाराज कोली को बचा रखा इसीलिए कि कोई अच्छा काज तुम सोचा, मुनि मन सोचा, लेकिन कर नहीं पाए तो अच्छा काज का काम का पूरा फल मिलेगा, नहीं करने से भी फल मिलेगा। कुशलन्यासी सिद्धंती, ले पाप कर्म पाप करने से बाद पाप का फल मिलेगा। पाप कर्म मोनी मन सोचने से हो नहीं, पाप नहीं होता कलयुग में। यही है असली कारण। ऐसे आसन है ना, बोलता तुम बोलता हाँ। तो परीक्षित महाराज, do you understand what I say? Nityananda, do you understand what I say?
Everybody understand what I said? তাহলে কলিযুগে কি চিন্তা করবে? তাহলে কলিযুগে বুড়া চিন্তা করোগে না আচ্ছা চিন্তা করোগে? In this current age, what do you think? Always good things or bad things? No answer. This. What you want to think always, good or bad? Good things. Auspicious thing. No bad things. But what is our actuality in daily life? Our actuality in daily life, we can see how to cheat others and get much more benefit in our life. Therefore, quarrel take place. Quarreling take place amongst us. Cheating take place amongst us. Ignorance take place amongst us. Darkness in our life. We feel completely dark. Life has no value, right? Lord gave us lots of facility, but Kali Maharaj, he make our life horrible, horrible life. Everybody thinking, okay, another round for you and all. Why? An ox stands. তপ শৌচ দয়া সত্য, সত্য গুরুত্ব বলতে তপ শৌচ দয়া সত্য, 4 path dharma. Tapa means meditation, shaucha means cleanliness, daya means compassion, sattva means truth. That is the 4 steps of dharma. But 4 steps of dharma, when Satyajug, it was there. When Satyajug up, then 1 leg off. Meditation gone, tapo gone. Shaucha, cleanliness. When Tretayug gone, cleanliness also gone. Compassion also gone. The Kali appeared. Satya, truth. What is truth? Embodiment of truth is Krishna himself. Lord himself. Lord is Krishna. And Lord appeared here in the form of Hare Krishna Mahamantra. If anyone want to accept Lord, they should accept Hare Krishna Mahamantra from the bona fide spiritual teacher. Bona fide spiritual teacher. Then we can have. আমি ভগবান অপেক্ষা করে নাকি? ভগবান তো আমাদের তোকে again class 4 to 5 Kirtan, 5 Krishna.